Let's begin. Astronomy and astrology. Here we come across with the two words, that is the astronomy and astrology. Astronomy is the study of the space, cosmos, the other celestial bodies that is other than the earth, the various types of the comets, asteroids, dwarf planets and planets, उनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी. दैट इज द खगोल शास्त्र जिनको बोला जाता है. The person who study the astronomy is called as a astronomer. उनको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है. एस्ट्रोलॉजी is the movement of the planets, the planetary movements have an impact or influence of the on the human life. That is the study or the subject matter of the astrology, and the person who study this, he or she is called as an astrologer. हिंदी में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र. So in the ancient time, in India, many granth, many work related to the astronomy had been written and organized, and a deep study of the astrology was made. Aryabhat, he made a remarkable contribution in the field of astronomy. So our first Indian satellite named after him, that is the Aryabhat. And he proved that earth rotate on its own axis, and he claimed that he propounded that the lunar eclipse is the nothing but the shadow of the earth on the moon, and which was generally during those days that particular thing used to called as a ajhar. Please remember this word Ajarbar. Ajarbar, that is the solar lunar eclipse. Apart along with the Aryabhatta, other astronomer like Brahmagupta, he had written the Brahma Samhita. He was also very popular in the astronomy. Varamihir was an astrologer, and he divided the whole astrology into the three part, that is the Tantra, Hora and Sanhita. His Granth named Brihad Sanhita gives information regarding the effects of planet on the main future, his characteristics, various classes of the animals, the time of the marriage, the making of pond, where to construct the well, where should be the garden, and which can be the good omen for the sowing. Such kind of the prediction कैसे बनाना है, कौन से कैलकुलेशन पे. सी जनरली द एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन. वो कैलकुलेशन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है. द सीजन, द मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट, द मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन, द मूवमेंट ऑफ द स्टार, उनके ऊपर दे मेकिंग द कैलकुलेशन एंड प्रेडिक्ट द थिंग्स, जिनको ज्योतिष शास्त्र बोला जाता है. आपके ऊपर मंगल भारी है, शनि की साया है, मंगल की माया है, ये सारी चीजें जो होती है, आपने यू माइट हैव हर्ड. ठीक है, आपका गुरु अभी खराब चल रहा है, आपका शनि खराब चल रहा है, ये सारी चीजों का जो प्रिडिक्शन लगाना, ये उसमें आता है. शायद आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल यू और नॉट. आपको मुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं, लेकिन एक बंदा बंदा तो नहीं, लेकिन आप उनको बोल सकते हो, एक महात्मा थे स्पेशली. तो ना, आई डोंट नो वाई कि वो ऐसे क्यों कमेंट्स सबके ऊपर लगाते रहते थे और ऐसे प्रीचिंग प्रीचिंग चलाते थे अपनी. वहां पे अगर कोई बंदा जाता है तो बंदा अपना क्वेश्चन लेके जाता है वहां पे बंदा, और उनको पूछते हैं भाई क्या तकलीफ है. बाबा जी अभी धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, धंधे में नुकसान बहुत है, लॉस बहुत है. तो बोला अच्छा, सुबह में नाश्ता करते हो? यस आई एम डूइंग. अच्छा, क्या खाते हो? समोसे, ब्रेड. अच्छा, कौन सी चटनी के साथ खाते हो? लाल चटनी के साथ. चलो एक काम करो, अब से हरी वाली के साथ खाना, कृपा बनी रहेगी. सच टाइप ऑफ द सजेशंस ही यूज्ड टू गिव, एंड द पीपल आर very crazy, and they are paying thousands of rupees for attending his class or for attending his preaching sessions. Okay, but I don't believe in the
astrology, especially the prediction made, or especially so called as a Rashi Phal, the horoscope, जिसमें 12 zodiac है, Gemini, Sagittarius, and the uh, Aquarius and all the peace, and these are the various zodiac, and उनके बेसिस पे कि आप अगर आप आज काम की शुरुआत करेंगे तो फायदा होगा, रिलेटिव्स के साथ पंगा ना करें, बाहर ना निकले, घर के बाहर मत जाइए, आपके लिए आज का कलर है पिंक कलर, पिंक कलर पहनेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ये सारी चीजें, आई डोंट बिलीव इन दैट, बट दैट इज द एस्ट्रोलॉजी, अ पार्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, और ये इंडिया में डेवलप हुआ है along with the India. Now the world has also accepted and world had also appreciated astrology and this science. Okay, next, that is the Vastu Shastra, and this is the last point of this chapter number 5, which is very important. A seldom time in the board exam this question has been asked by the paper setter about the Vastu Shastra. Basically, Vastu is the word related to the architecture. We have already studied in a chapter number 3 in the architecture and sculpture. We studied that the Sanskrit word is Vastu for the architecture, Vastu Shastra. So, the study for the construction. Here, it gives us a detailed information about how your construction should be. आपको अपना कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना चाहिए इन केस इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ओन हाउस, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर पैलेस और अश्वशाला or stable where the generally the kings used to keep their horses and the elephants and all, and which type of how you should construct your bedroom, उसमें बेड कहाँ पे होना चाहिए, देन योर टेम्पल कहाँ पे होना चाहिए, देन बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में बाथरूम होना चाहिए, एंड विच टाइप ऑफ द थिंग्स. अभी तो देखिए लेटेस्ट जनरल लेटेस्ट अभी नए नए विचारों के साथ अभी वास्तुशास्त्र चल रहा है, और हियर आई वुड लाइक टू से the each and every houses are being constructed according to the वास्तु शास्त्र now. सारे जो हाउसेस बनते हैं वो सभी अभी वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं. Okay, so let's we study the vastu shastra. Vastu shastra of India is being recognized, dignified and praised by the many countries of the world. Brahma, Narad, Brahaspati, Bhrigu, Vasishtha, Vishwakarma have made a unique contribution in the field of the Vastu Shastra. So these people, whatever I told you the name, these people consider as a deities, and they have contributed a lot in the field of the Vastu Shastra. The god of the architecture of the god is called as a Vishwakarma. Vishwakarma called as a architecture of the god. Okay. They have propagated the principle of construction of dwelling, temple place, ashwashala, forts, a storehouse of the ammunition, and the town planning. The description of Vastu Shastra is mentioned in the Brihad Samhita. Rana Kumbha of the Mewar during the time of the Mirabai. You might have heard the word, you might have heard about this person, Rana Kumbha, in the 15th century. Or when we were studying about the 15th or 16th century, at that time I told that in the 15th and 16th century the Bhakti movement was started, and Bhakti movement इन दैट द नरसिंह मेहता, मीराबाई, कबीर, रहीम, ये सारे लोग हो चुके थे. तो उस दौरान राणा कुंभा and he made the changes in the Vastu Shastra. He bring the changes. According to the traditional belief, the Vishwakarma was the first architecture of the god, and he divided the Vastu Shastra into the 8 sections. The various information of Vastu Shastra like sections of the place, shapes, structure, proper planning of the things, temple, Brahmasthan, डाइनिंग हॉल, बेडरूम etc आर मेंशन कि आपका पूरा घर का नक्शा जो है वो कैसे बनना चाहिए पूरा. अभी तो मैं रिसेंटली आई वाज I went to my friend house and I found 7 horses, a picture of the 7 horses, and I told, why have you kept this
picture of the seven horses. Then he told, according to the Vastu Shastra, if you are putting or if you are keeping a picture of the seven horse in your house, then you will get more and more profit. The money will, you will get more and more money. And I told, okay, yes, then don't go to the work, just sit at the home and look at only to the picture. Maybe you will get more money. दैट वाज माय क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली, बट अभी ये ऐसा है। और आपने देखा भी होगा, बहुत सारी दुकानों में जाते हो आप, तो स्पेशली हिंदू रिलीजन की कोई दुकान है, हिंदू जी जो हिंदुज्म फॉलो करते हैं उनकी शॉप पे अगर आप जाएंगे, तो आपको एक कांच का बाउल दिखाई देगा, और वो बाउल के अंदर एक छोटा सा टोटोइस दिखाई देगा, उसमें पानी भरा रहा हुआ होगा। या टोटोइस कोई भी, अगर कांच का हो सकता है या कोई धातु का भी हो सकता है, मेटल का भी। तो ये सच टाइप ऑफ द बिलीव्स अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र। पूछेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे बस ये वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम भी बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये वास्तुशास्त्र है। दैट्स ऑल। At the time passing by, the changes at the time passes by, the changes are taking place regarding the principles and the understanding of the Vastu Shastra. Now it is being adopted by the foreigners. As I have told you that there are so many signs which have been encouraged, which have been praised, and which have been adopted even by the foreigners. बेसिकली मुझे तो लगता है कि हमारे कंट्री में हमारे एंशियंट पीपल ने जितना भी डेवलपमेंट किया, वो सारी चीजें जो है वर्ल्ड ने एक्सेप्ट की है, एडॉप्ट की है। हाँ, मे बी उनके फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी उनके फॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया का ही, इंडियन ओरिजिन ही दे आर एडॉप्टिंग। द रिसेंट एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू, द योगा। Yoga has been adopted by the whole world, and we are celebrating the uh, World Yoga Day, 21st June, International Yoga Day. Okay, so here I would like to say our ancient people were so great, so expert, intellectual, uh, mind blowing philosophy, the norms, customs, and the traditions they have, and due to that, there was a great development in the field of science and technology, and that is why we can say it reflects in our culture and tradition, that is the unity in diversity. Okay, thank you so much. Here our chapter gets over.